हाय एवरीवन। सो आज मुझे पता चला कैफ़े का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। सो बाय द virtue of new modified syllabus we just have to read one chapter that is occupational health. तो चलो वो पढ़ लेते हैं, अगर टाइम बचा देन वी विल सी एम सी एच को और आधा पढ़ लेंगे 1 घंटे, ठीक है। सो लेट्स रीड। अभी मैं आधे घंटे पढ़ती हूँ, देन उसके बाद आई विल गो एंड हैव सम स्नैक्स एंड देन वी विल रिज्यूम दिस। सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज एसेंशियल preventive medicine. The joint ILO WHO Committee on Occupational Health, in the course of its first session held in 1950, gave the following definition: occupational health. Oh, someone came. रुको, let me. मैं नहीं देख पा रही हूँ कौन आया है। Oh, hi शशांक. So occupational health should aim at promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, social well-being of workers in all occupations. The prevention among workers of departures from health causes caused by their working condition, the protection of worker in their employment from risk, protection of workers in their employment from risk, resulting from factors adverse to health, placing the maintenance of the worker in occupational environment adapted to his psychological and physiological equipment, and to summarize the adaptation of work to man and man to his job. पता नहीं क्या डेफिनेशन है, अनाप शनाप सा। मुझे तो बाबरे पढ़ के ही मेरा हालत ख़राब हो गया। ये पूरा डेफिनेशन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ का। मैं एक और बार पढ़ने जा रही हूँ, ओके। सो डिफाइन ऐसा किया गया: ऑक्यूपेशनल हेल्थ शुड एम एट द प्रमोशन and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of worker in all occupation, the prevention among workers of departures from health caused by their working condition, the protection of worker in their employment from risk resulting from factors adverse to health, the placing and maintenance of the worker in an occupational environment adapted to his physiological and psychological equipment, and to summarize the adaptation of work to man and to each man to his job. So, preventive medicine and occupational health have the same aim: the prevention of disease and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well being of the worker in all occupation. The level of application of preventive measures are the same: health promotion, specific protection, early diagnosis, treatment, disability limitation, and rehabilitation. द टूल्स आर द सेम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ का प्रमोशन करना है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। सो द टूल्स आर द सेम: एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, स्टैटिस्टिक, हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ एजुकेशन. Occupational health, therefore, is the application of preventive medicine in all places of employment. In the past, it was customary to think of occupational health entirely in relation to factories and mines. Hence, the term industrial hygiene, industrial health were vague. vogue. Modern concept of occupational health now embraces all type of employment, including mercantile and commercial enterprises, service trades, forestries and agriculture, and includes all the subjects of industrial hygiene, industrial disease, industrial accident, toxicology, in relation to the industrial hazard, industrial rehabilitation, and occupational psychology.
Occupational health in agriculture and ergonomics, health engineering are relatively new concepts. So ergonomics जो होता है ना is now a well recognized discipline and constitute an integral part of any advanced occupational health service. The term ergonomics is derived from the Greek ergon meaning work and nomos मतलब होता है law. वर्क का लॉ एर्गोनॉमिक्स. नॉमिक्स मतलब हो गया लॉ और एर्गो मतलब हो गया वर्क. Now, it simply means fitting the job to the worker. Training in ergonomics involves designing of machine, tools, equipments, and manufacturing processes, layout of the places of work, method of work, and environment in order to achieve greater efficiency of both man and machine. The object of ergonomics is to achieve the best mutual adjustment of man and his work for the improvement of human efficiency and well being. The application of ergonomics has made a significant contribution to reducing industrial accident and to overall health and efficiency of the worker. Uh, Basit Hussain, hello. So health of the worker पढ़ लेते हैं. So industrial workers constitute only a segment of the general population, and the factors that influence the health of the population also applies equally to industrial worker, that is housing, water, sewage, and what? No way. ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरा voice, I was so insecure of my voice, and oh my god. अब मुझे नहीं मन कर रहा है पढ़ने का. ओके. तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स कंस्टिट्यूट ओनली अ सेगमेंट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द. Oh my god. I'm from जमशेदपुर. अरे पढ़ते ना यार, तुमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया. हाँ ठीक है, चलो पढ़ते हैं. अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं. हेल्थ ऑफ द वर्कर हम लोग पढ़ रहे हैं. सो इंडस्ट्रियल वर्कर कंस्टिट्यूट ओनली अ सेगमेंट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन also applies equally to industrial workers, that is housing, water, sewage and water disposal, nutrient and education. A detailed consideration of these factors can be found in chapter 2. In addition to these factors, the health of the industrial worker in a large measure will also be influenced by the condition prevailing in their workplaces. One of the declared aim of occupational health is to provide a safe occupational environment in order to safeguard the health of the worker and to step up industrial production. So basically हम लोग को बेसिकली हम लोगों को छोड़ो मटिया, आगे पढ़ते हैं. ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट.
डूड, यहाँ पे हम लोग वर्कर्स के बारे में पढ़ तो रहे हैं, पर ये कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, पीएसएम. सो दिस इज़ एन एमबीबीएस कोर्स. और चैप्टर 2 के बारे में क्या बोला वो मुझे भी नहीं पता है. मैंने भी आज तक चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है. वो फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ाए होंगे वो लोग, पता नहीं. और यार क्या, ओ माय गॉड. यार यार बसीत हुसैन सुनो, कल में मेरे को पढ़ने दो यार. फेल कर जाएंगे गंदा वाला. यार मेरे को पढ़ने दो, तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो. उसके बाद ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है. सो बाय ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट इज मेंट द सम ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस. यार मुझे कोई कोचिंग वोचिंग नहीं चाहिए भाई. ओ गॉड. अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए चैट को हटा दे रही हूँ. या, दैट्स गुड. सो ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट में क्या है कि बाय ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट इज मेंट द सम ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन एंड इन्फ्लुएंसेस which prevail at the place of work and which have bearing on the health of the working population. The industrial worker today is placed in a highly complicated environment, which is getting more complicated as man is being more ingenious. Basically, there are three type of interactions in a working environment: man and physical, chemical and biological agents, man and machine, man and man. ठीक है. तो मैन एंड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट में क्या है. तो फिजिकल एजेंट, द फिजिकल फैक्टर इन विच इन्वायरमेंट sorry, the physical factor in a working environment which may be adverse to health are heat, cold, humidity, air movement, heat radiation, light, noise, वाइब्रेशंस, आयनाइजिंग रेडिएशन. सो इसका मतलब क्या है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो मैन का जो है वो सूटेड नहीं है. जैसे कि अगर कोई आयरन वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हीट से हीट के आसपास रहेगा. देन कोई अगर लोहे बनाने वाली ही फैक्ट्री को ले लो तो उसमें बहुत ज़्यादा साउंड भी होगा. अगर वेल्डिंग हो रही है या ये सब हो रहा है तो वो क्या होगा, उससे या तो कान में हियरिंग प्रॉब्लम्स आने लगेंगे हीट के वजह से. स्किन जो है वो डैमेज होने लगेगा, या बहुत सारा जो प्रॉब्लम होगा. रेडिएशन, जैसे डॉक्टर्स भी रेडिएशन के काफ़ी ये में रहते हैं, तो वो सब हेल्थ हैज़ार्ड आ जाएगा ना हमारा. तो वही बोला गया है कि ये सारे जो फिजिकल एजेंट्स है, जैसे रेडिएशन, लाइट, नॉइज, वाइब्रेशन एंड आयनाइजिंग रेडिएशन, दीज फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, these factors act in different ways on the health and efficiency of the worker, slightly or in different combinations. So basically इस ये हेल्थ भी ख़राब करता है और एफिशिएंसी भी ख़राब करता है वर्कर का. The amount of working and breathing space, toilet, washing and bathing facilities are also important factor in an occupational environment. Now chemical agent हम लोग देख लेते. Chemical agent क्या है? So these comprise a large number of chemicals, toxic dust, and gases which are potentially hazardous to the health of the worker. Some chemical agents causes disabling respiratory illness. Some cause injury to the skin. सो जो डस्ट होता है, केमिकल एजेंट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करेंगे, कुछ स्किन को हार्म करेंगे, एंड सम मे हैव अ डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन द ब्लड एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी.
Now we have biological agents. The workers may be exposed to viral, rickettsial, bacterial, and parasitic agents which may result from close contact with animal or their products contaminated with water, soil or food. Then we have man and machine. An industry or factory implies the use of machines um, driven by power with emphasis on mass production. So, the unguarded machines, protruding and moving parts, poor installation of the plant, lack of safety measures are are the causes of accidents, which is a major problem in industries. So mशीन्स जो होता है, मूविंग पार्ट्स जो होता है, वो क्या होता है कि जो वर्कर है उनको हार्म कर सकता है, तो दैट्स अ मेजर कॉज ऑफ safety. So, working for long hours in unphysiological postures is the cause of fatigue, backache, disease of the joint, muscles, and impairment of workers' health and efficacy. Hi, Shank. सो आगे बढ़ते हैं मैन एंड मैन. सो मैन एंड मैन में क्या प्रॉब्लम है? देयर आर न्यूमरस साइकोलॉजिकल psychosocial factors which operate at the place of work. So these are the human relationship amongst workers themselves, or the other on or on the one hand, and those in authority over them on the other. Example of psychosocial factors include the type and rhythm of work, work stability, service condition, job satisfaction, leadership style, security, workers' participation, communications, system of payment, welfare conditions, degree of responsibility. शशांक कुछ कमेंट करो ना. Degree of responsibility, trade union, activities, incentives, and host of similar other factors, and all entering the field of human relationship. In modern occupational health, the emphasis is upon the people, the condition in which they live and work, their hopes and fears, and their attitude towards their job, their fellow workers, and employ employers. So, the occupational environment of the worker cannot be considered apart from his domestic environment. Both the both are complementary to each other. The worker takes his worries home and bring to his work disturbance which arises from his domestic environment. तो ये ऑफिस की जो प्रॉब्लम होती है वो घर लेके चले जाते, घर की प्रॉब्लम ऑफिस लेके आ जाती है, तो बोल रहे हैं कि दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते. ऊपर से मैन एंड मैन में क्या आ गया कि जो वर्क पार्टिसिपेशन है, कम्युनिकेशन है, सिस्टम ऑफ पेमेंट है, लीडरशिप स्टाइल है, सिक्योरिटी, सर्विस, देन वर्क रिदम, वर्क स्टेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं मैन टू मैन में. तभी ना एक पर्सन मोटिवेटेड रहेगा और उसको मन करेगा जा करके काम करने. हाय शांक. So हाँ, तो stress at work may disturb his sleep, just as stress at home may affect his work. Severe prolonged stress, no matter where it has been aroused, may produce serious physical or mental symptoms which do not allow man to work efficiently.
According to ecological approach, occupational health represents a dynamic equilibrium or adjustment between the industrial worker and the occupational environment. Now अब हम लोग रियल टॉपिक में आते हैं शंक कि occupational hazard. An industrial worker may be exposed to 5 types of hazards depending upon his occupation. 5 तरीके का क्या हजार्ड है? पहला फिजिकल हजार्ड, दूसरा केमिकल हजार्ड, तीसरा बायोलॉजिकल हजार्ड, चौथा मैकेनिकल हजार्ड, पांचवा है साइको सोशल हजार्ड. ठीक है. सो फिजिकल, केमिकल, biological, mechanical, psychosocial. Then we have occupational disease. ठीक है. लेड पॉइजनिंग के ऊपर तक पढ़ के फिर उसके बाद वी विल टेक सम ब्रेक. ओके शांकी, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं. तो फिजिकल हजार्ड क्या है शान? तो हीट एंड कोल्ड इज द फिजिकल हजार्ड. क्या है हीट एंड कोल्ड में? द कॉमन फिजिकल हजार्ड इन मोस्ट इंडस्ट्रीज इज हीट. The direct effect of heat exposure are burn, heat exhaustion, heat stroke, heat cramps. The indirect effects are decreased efficiency, increased fatigue, enhanced accident rate. Many industries have local hotspots, oven and furnace which radiate heat. Radiant heat is the main problem in foundry, glass and steel industries. ठीक है. While heat stagnation is the principal problem in jute, cotton, textile industry. High temperature are also found in mines, for instance in Kolar gold mine of Mysore, which is the second deepest mine in the world. Temperature as high as 65 degrees Celsius are recorded. ए बसीद हुसैन, तुम MBBS कर भी रहे हो कि तुमको डाउट होगा? Physical work under such condition is very stressful and impair the health and efficiency of the worker. For gainful work involving sustained and repeated effort, a reasonable temperature must be maintained in each workroom. The Indian Factory Act has not laid down any specific temperature standard. However, the work of Rao and Mukherjee et al. Indicates that a corrected effective temperature of 69 to 80 degree Fahrenheit है right, यानी कि 20 to 27 degree Celsius is the comfort zone in the country, and temperature above 80 degree Fahrenheit यानी 27 degree Celsius causes discomfort. Important hazards associated with cold work are chilblains, erythrocyanosis, then immersion food. ये सब ठंडे का है, हमने गर्म का देख लिया. Then we have immersion food, frostbite as a result of cutaneous vasodilation. General hypothermia is not unusual. हाइपोथर्मिया इज टेम्परेचर डाउन हो जाना, ये अनयूजुअल नहीं है. दिस इज ऑल्सो वेरी यूजुअल. सो लाइट, अब लाइट के बारे में देखते हैं कि लाइट के बारे में क्या बोलता है कि कितना लाइट होना चाहिए. इसमें जूम तो नहीं होता है, नहीं होता है जूम. ये दिख नहीं रहा है. सो लाइट क्या है? द वर्कर मे बी एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ पुअर इल्यूमिनेशन और एक्सेसिव ब्राइटनेस. या तो कम लाइट हो रहा है या तो ज़्यादा लाइट हो रहा है. द अक्यूट इफेक्ट ऑफ पुअर इल्यूमिनेशन आर आई स्टेन, हेडेक, आई पेन, लैक्राइमेशन है शायद,
congestion around the cornea, and eye fatigue. The chronic effect on health include minor nystagmus, exposure to excessive brightness or glare is associated with discomfort, annoyance, visual fatigue. Intense direct glare may also result in blurring of vision and lead to accidents. There should be sufficient and suitable lighting and natural and artificial wherever persons are working. नॉइज़ के बारे में क्या बोलता है? सो नॉइस के बारे में क्या बोल रहा है? नॉइज़ के बारे में बोल रहा है, नॉइज़ इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड in many industries. The effect of noise are of two types. First is auditory effect and second is non-auditory effect. So auditory effect, which consists of टेम्परेरी और परमानेंट हियरिंग लॉस. सो ऑडिटरी इफेक्ट मतलब हो गया कान से रिलेटेड, नॉइज़ में कान में डैमेज हो रहा है, सो परमानेंटली या टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो सकता है. और नॉइज़ की वजह से नॉन ऑडिटरी इफेक्ट क्या हो सकता है, विच कंसिस्ट ऑफ नर्वसनेस, फटीग, इंटरफेरेंस with communication by speech, decreased efficiency, and annoyance. The degree of injury from exposure to noise depends upon a number of factors such as intensity and frequency range, duration of exposure, individual susceptibility. Then we have vibration. So vibration, especially in the frequency range 10 to 500 hertz, may be encountered in work with pneumatic tools such as drill and hammer. Vibration usually affects the hands and arms. After some months or years of exposure, the fine blood vessels of the finger may become increasingly sensitive to spasm. White finger कहते हैं उसको, ठीक है. जो कुछ महीने या कुछ साल बाद हाथ जो होता है सेंसिटिव हो जाता है टू वाइब्रेशन, तो उसको हमें वाइट फिंगर्स कहते हैं. एक्सपोजर टू वाइब्रेशन में ऑल्सो प्रोड्यूस इंजरीज ऑफ द जॉइंट ऑफ हैंड्स, एल्बोज एंड शोल्डर्स. सो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है? सो इट इज़ हैंड vibration से. Then we have ultraviolet radiation. So occupational exposure to ultraviolet radiation occurs mainly in arc welding. Okay, some radiation mainly affect the eyes, causing intense conjunctivitis, keratitis. Welders flash कहते हैं, इसलिए उन्हें आँखों में वो ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आँख सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है यूवी रेडिएशन से. जो वेल्डिंग करते हैं ना उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड पार्ट क्या होता है? आँख, क्योंकि आँख में कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, वेल्डर्स फ्लैश कहते हैं. सिम्टम्स आर रेडनेस ऑफ द आई and pain. These usually disappear in a few days with no permanent effect on the vision or on deeper structures of the eye. Hi, mummy. Hi. Hi, mummy. देन वी हैव आयनाइजिंग रेडिएशन. सो मम्मी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री में जाते या कोई काम करने जाते, जैसे तुम भी ड्यूटी जाती हो या हम लोग काम करने जाते हैं, तो जिस हज़ार्ड से, जिस प्रॉब्लम से हम लोग
फेस करते हैं वो सब के लिए लॉज बने हुए हैं कि इतना से इतना हमारा वर्किंग आवर्स होना चाहिए, इतना से इतना नॉइज़ का एक्सपोजर या फिर लाइट का एक्सपोजर, वाइब्रेशन का, यूवी लाइट का, आयनाइजिंग रेडिएशन का। क्यों? क्योंकि ये ना हो कि हम लोग काम करने जा रहे हैं हमें ही प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मम्मी हम लोग ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ पढ़ रहे, इसलिए पढ़ रहे कि क्या क्या कितने कितने लिमिट तक ही हमें करना है वो। देन आयनाइजिंग रेडिएशन, जिससे हम लोग अगर रेडियो लेते हैं या फिर एक्सरे वेक्सरे देख रहे हैं तो देख नहीं रहे, कर रहे हैं, उसके पास आए हुए हैं, मशीन के पास हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और रेडिएशंस के अंदर चले गए तो उससे हमें क्या हो सकता है ना, कैंसर वैंसर भी हो सकता है। तो वही है कि कितना रेडिएशन कितना तक लिमिटेड है और कितना के बाद हार्मफुल हो जाएगा। तो यही सब हम लोग पढ़ रहे हैं मम्मी। Ionizing radiation. So ionizing radiation is finding increasing application in medicine and industry. X-ray, radioactive isotope. Important radioisotope are cobalt 60 and phosphorus 32. Certain tissues such as bone marrow are more sensitive than other and from a कौन सा टिश्यू सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है? हमारा बोन मैरो, ठीक है। तो अगर बोन मैरो हमारा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है तो कैंसर किधर का होगा? ल्यूकेमिया और ये सब हो सकता है एक्सरे और ये सब से, ठीक है। हम लोग जो ऑर्थो वाले लोग हैं जो रेडिएशन से पूरा एकदम नील्स वेल्स लगाते हैं और पूरा रेडिएशन बहुत ज़्यादा रहता है उनमें, तो वो सबको बोन की डिसीजेज सबसे पहले हो सकती है क्योंकि हमारा जो बोन मैरो होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सर्टेन टिश्यूज सच एज बोन मैरो आर मोर सेंसिटिव than other, and from a genetic standpoint there are special hazard where the gonads are exposed. The radiation hazard comprise genetic change, malformation, cancer, leukemia, डेपिलेशन, अल्सरेशन, स्टेरिलिटी। सो बेसिकली गोनाड्स जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। बोन मैरो, गोनाड्स ये सब एक्सपोज है और अगर गोनाड्स में यूवी रेडिएशन लगा तो ये जो स्पर्म बनेगा या ओवम बनेगा वो म्यूटेटेड होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो म्यूटेटेड हो सकता है। सो इट्स क्वाइट बैड एंड इन एक्सट्रीम केसेस डेथ हो सकता है। द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजी प्रोटेक्शन हैज सेट मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर at 5 REM per year to the whole body. Yes, yes, correct, शशांक, yes. ये था हमारा फिजिकल हजार्ड। इसमें 6 पॉइंट्स आते हैं। पहला था हीट एंड कोल्ड, दूसरा था लाइट, तीसरा था नॉइस, चौथा था वाइब्रेशन, पांचवा था यूवी रेज और छठा था आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है शान? तो तुम ऐसा कर लेना, पहले हीट और कोल्ड लिख लेना। हीट और कोल्ड के बाद क्या आएगा? लाइट आएगा। मान लो एक फायर को इमेजिन कर लो, उसमें हीट आएगा तो और फिर लाइट आता है और फिर उसके बाद नॉइज़ को इमेजिन कर लो, नॉइज़ होगा तो वाइब्रेशन भी होगा। देन तुम यूवी लाइट को अगर इमेजिन करोगे देन आयनाइजिंग रेडिएशन को भी इमेजिन कर लो। तो ऐसे करके तुम्हें 6 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। यस, फिजिकल हो गया, फिजिकल हजार्ड। नाउ केमिकल हजार्ड देखते हैं। देयर इज हार्डली एनी इंडस्ट्री which does not make use of chemical. Chemical hazards are on the increase with the introduction of newer and complex chemicals. Chemical agents act in 3 ways: local action, inhalation, and ingestion. The ill effect produced depend upon the duration of exposure, the quantum of exposure, and individual susceptibility. लोकल एक्शन, लोकल एक्शन क्या है? सम केमिकल्स कॉजेस डर्माटाइटिस,
eczema, ulcer, and even cancer by primary irritating action. Some causes dermatitis by an allergic action. Some chemicals, particularly the yeah, some chemicals, particularly the aromatic nitro and amino compounds such as TNT and aniline are absorbed through the skin and causes systemic effect. Occupational dermatitis is a big problem in industry. Rao and Banerjee were the first to draw attention in India to prevalence of occupational dermatitis due to machine oil, rubber, X-ray, caustic alkalines and lime. Yes, Shashank, very good, very good. नाउ वी हैव इनहेलेशनल्स. ठीक है, पहले लोकल एक्शन हो गया. लोकली वो जो डर्माटाइटिस कॉज करता है मोस्ट ऑफ द केमिकल्स, देन इनहेल करेंगे तो क्या होगा, तो लंग्स उड़ेगा. इनहेलेशनल में हमारा क्या क्या टॉपिक्स है, सो वी हैव डस्ट, वी हैव गैसेस, वी हैव मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, एंड देन वी हैव थ्री टॉपिक्स. सो इनहेल हम लोग तीन चीज़ करेंगे. क्या क्या, डस्ट, गैस एंड मेटल एंड देयर कंपाउंड. तो डस्ट देखते हैं. डस्ट आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स विथ साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 से 150 माइक्रॉन्स. They are released into the atmosphere during crushing, grinding, abrading, loading, and unloading operations. Dusts are produced in a number of industries: mines, foundry, quarry, pottery, textile, wood, and stone working industries. Dust particles larger than 10 microns settle down from the air rapidly while the smaller ones remain suspended indefinitely. यानी 10 माइक्रोन से ज़्यादा अगर डस्ट का साइज़ है तो वो सेटल कर जाता है. हाँ, थैंक यू अंकल. बट अगर 10 माइक्रोन से कम है साइज़ ये का डस्ट का, तो वो सस्पेंड रहता है एयर में ही हमारा. पार्टिकल्स स्मॉलर देन 5 माइक्रॉन्स आर directly inhaled into the lungs. सो 5 माइक्रॉन से जो छोटा डस्ट रहता है वो डायरेक्टली हम लोग इनहेल कर देते हैं, लंग्स में चला जाता है एंड आर रिटेन्ड देयर, और वो वहीं लंग्स में ही रहता है. दिस फ्रैक्शन ऑफ द डस्ट इज नोन एज रेस्पिरेबल डस्ट. उसको हम लोग रेस्पिरेबल डस्ट कहते हैं. अभी न्यूमोकोनियोसिस नहीं आया है शान. वी आर जस्ट रीडिंग की फिज़िकल हज़ार्ड पढ़ लिया, अब केमिकल हज़ार्ड पढ़ रहे. सो केमिकल या तो हाथ में लग सकता है जिससे डर्मेटाइटिस मेनली होता है, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस. दूसरा है तुम डस्ट मतलब इनहेलेशनल है, तो डस्ट्स को इनहेल कर दो लोगे. दिस इज़ नॉट कोल वोल को नहीं इनहेल कर रहे हो, जस्ट डस्ट है. जो रोड में भी होता है ना वो भी डस्ट ही होता है. तो इसमें बता रहा है 10 माइक्रॉन से छोटा जो होता है वो सस्पेंडेड रहता है. 5 माइक्रॉन से जो छोटा पार्टिकल्स जो डस्ट का होता है उसको हम लोग इनहेल कर लेते हैं, और एक बार अगर हम लोग इनहेल कर दिए तो वो लंग्स में ही रहेगा हमेशा. उसको हम लोग रेस्पिरेबल डस्ट कहते हैं एंड इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोकोनियोसिस. अच्छा, तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूमोकोनियोसिस के लिए. डस्ट्स हैव बिन क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक डस्ट, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डस्ट. ठीक है. द इनऑर्गेनिक डस्ट सच एज सिलिका, माइका, कोल, एस्बेस्टोस डस्ट. द ऑर्गेनिक डस्ट्स आर कॉटन, जूट एंड द लाइक. The soluble dust dissolve slowly, enter the systemic circulation and are eventually eliminated by the body metabolism. The insoluble dust जो होता है remain more or less permanently in the lungs. यानी ये जो कोल जितना भी हम लोग स्मेल किए जा रहे हैं, कोल, माइका, एस्बेस्टोस, सिलिका, ये हमेशा लंग्स में रहेगा जब तक जिंदा है तब तक. They are mainly the causes of pneumoconiosis. The most common dust disease in this country are silicosis and anthracosis.
Yes, very true, Shashank. न्यूमोकोनियोसिस ऑक्यूपेशनल, न्यूमोकोनियोसिस तो उसी को बोलते हैं ना, ऑक्यूपेशनल डिजीज को। और मोस्ट कॉमन है सिलिकोसिस एंड आर्थ्रोकोसिस, एंथ्राकोसिस। ठीक है, अब गैसेस देख लेते हैं। सो exposure to gases is common hazard in industries. Gases are sometimes classified as simple gases जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एस्फेक्सिएटिंग गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, एंड एनेस्थेटिक गैसेस जैसे क्लोरोफॉर्म ईथर, क्लोर एथिलीन। सो तीन ग्रुप में बांटा गया है क्या? सो सिंपल गैस, asphyxiating gas, and anesthetic gas. So carbon monoxide hazard is frequently reported in coal gas manufacturing plant and steel city. यानी कि हमारा है स्टील सिटी, सो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन हम लोग होते होंगे, गैस को तो इनहेल करते ही है। सो मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, ठीक है, a large number of metals and their compounds are used throughout the industry. The chief mode of entry of some of them is by inhalation. मेटल्स कैसे हमारे लंग्स में घुस जा रहा है? इनहेल करके, एज डस्ट और फ्यूम्स। द इंडस्ट्रियल फिजिशियन शुड बी अवेयर ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लेड, एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, मर्क्यूरी, phosphorus, chromium, zinc, and others. The ill effect defined upon the duration of exposure and the dose or concentration of exposure. Unlike the pneumoconiosis, most chemical intoxications respond फेवरेबली टू सीजेशन। छोड़ देंगे तो फेवरेबल होता है, पर ये सब जो न्यूमोकोनियोसिस होता है ना, वो तो परमानेंटली लंग्स में जाके बैठ ही जाता है, थोड़ी ना उठने वाला है। मोस्ट केमिकल इंटॉक्सिकेशन रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू सीजेशन, एक्सपोजर एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। ना तीसरा क्या है? इंजेक्शन है। पहला था हमारा, फर्स्ट वन वॉज लोकल एक्शन, सेकेंड वॉज इनहेलेशनल, थर्ड इज इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब पी ही गए, खा ही गए। ऑक्यूपेशनल डिजीज में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ केमिकल्स। ये दिख रहा है? ठीक है, सो ऑक्यूपेशनल, yes, occupational disease may also result from ingestion of chemical substances such as lead, mercury, arsenic, zinc, chromium, cadmium, phosphorus। ये सब को इंजेक्शन मतलब खा लेंगे तो उन सब से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। So usually these substances are swallowed in minute amount through contaminated hands, foods, or cigarette. Much of the ingested material is excreted through feces and only a small proportion may reach the general blood circulation. ठीक है, ये हो गया फिजिकल और केमिकल हजार्ड हो गया। देन बायोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है? वर्कर्स में बी एक्सपोज टू इन इन्फेक्टिव एंड पैरासाइटिक एजेंट्स, जो हम लोग इन्फेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोज है एट द प्लेस ऑफ वर्क। द ऑक्यूपेशनल डिजीज इन दिस कैटेगरी आर ब्रूसिलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्रैक्स, हाइड्राटिडोसिस, सीताकोसिस, टेटनस, एंसेफेलाइटिस, फंगल इन्फेक्शन, schistosomiasis, and host of others. Persons working among animal products, example hair, wool, hide, and agriculture works, are specially exposed to biological hazards. Hi, mummy. Mechanical hazards क्या होता है? So the mechanical hazards in industry center around machinery protruding and moving parts and the like. About 10% of the accident in industries are said to be due to mechanical causes.
नाउ वी हैव साइकोसोशल हज़ार्ड। तो ये क्या होता है भाई? तो द साइकोसोशल हज़ार्ड अराइजेस फ्रॉम द वर्कर्स फेलियर टू अडेप्ट टू एलियन psychosocial environment, frustration, lack of job satisfaction, insecurity, poor human relationship, emotional tension are some of the psychosocial factors which may undermine both physical and mental health of the worker. The capacity to adapt to different working environment is influenced by many factors such as education, cultural background, um, family life, social habit, and what the workers expect from the employment. The health effect can be classified in two main categories: psychological and behavioral change आ जाएगा person में, including hostility, aggressiveness, anxiety, depression, tiredness, alcoholism, drug abuse, sickness, abstinence, absent होना, देन साइकोसोमैटिक हेल्थ इल हेल्थ हो जाएगा, जैसे इंक्लूडिंग फिटीग, हेडेक, पेन इन द शोल्डर। ये तो मुझे करता है पेन इन द शोल्डर, फटीक भी रहता है, नेक एंड बैक में पेन होना ये भी रहता है। प्रॉस्पेरिटी टू पेप्टिक अल्सर, अरे प्रोपेंसिटी टू पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज एंड रैपिड एजिंग। Reports from various parts of the world indicate that physical factors जैसे कि heat, noise, poor lighting also play a major role in adding to or precipitating mental disorder among workers. The increasing stress on automatism, electronic operation, and nuclear energy may introduce newer psychosocial health problems in industries. Psychosocial hazard are therefore assuming more importance than physical or chemical hazard. नाउ हम लोग देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। सो देयर इज नो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर द टर्म ऑक्यूपेशनल डिजीज. However, occupational disease are usually defined as disease arising out of or in the course of employment. Disease arising out of or in the course of employment ये occupational disease होता है. For convenience they may be grouped as disease due to physical agent, disease due to chemical agent, then disease due to biological agent, occupational cancers, occupational dermatosis, disease of psychological origin. सो व्हाट डू वी हैव इन डिजीज़ ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स? वही है, उसको समराइज कर दिया गया है. हीट हाइपर पायरेक्सिया, हीट एग्जॉशन, हीट सिंकोप, हीट क्रैम्प, बर्न्स एंड लोकल इफेक्ट्स सच एज prickly heat, then cold में drenched food, frostbite, chill brains, then light में occupational cataract and minus nystagmus, pressure में Cations disease, air embolism, blasts, then noise में occupational deafness, radiation में cancer, leukemia, aplastic anemia, pancytopenia, mechanical factors में injuries and accident, electricity में burn हो जाता है. देन डिजीज़ ड्यू टू केमिकल एजेंट में गैसेस आएगा CO2, CO, HCN, CS2, NH3, N2, H2S, HCl, SO2. दिस कॉसेस गैस पॉइजनिंग. डस्ट आएगा निमोकोनियोसिस में, कोल डस्ट, एंथ्राकोसिस कहते हैं, सिलिका से सिलिकोसिस होता है, एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस होता है, लंग कैंसर कॉज करता है, आयरन से सिड्रोसिस होता है, ऑर्गेनिक या फिर वेजिटेबल डस्ट, केन फाइबर से बैगासोसिस होता है, बैगासोसिस. देन कॉटन डस्ट से क्या होता है? बिसिनोसिस. टोबैको से टोबैकोसिस. हे और ग्रेन डस्ट से फार्मर्स लंग होता है. मेटल एंड देयर कंपाउंड्स. सो टॉक्सिक हजार्ड फ्रॉम लेड, मर्करी, कैडमियम, मैंगनीज, बेरिलियम, आर्सेनिक, chromium, etc. Then we have chemicals जैसे acid, alkali, pesticide. Then we have solvents, carbon, bisulfite, benzene, trichloroethene and chloroform. Disease due to biological agents जैसे brucellosis, leptospirosis, anthrax and antinomocosis. Then hydrotidosis, psittacosis, tetanus, encephalitis, fungal infection. Occupational cancer, cancer of the skin, lungs, bladder.
occupational dermatosis, so dermatitis, eczema, diseases of the psychological origin, so industrial neurosis, hypertension, peptic ulcer, etc. ओके अब हम लोग कोनियोसिस में आ गए. नीमोकोनियोसिस पढ़ लेते हैं, देन हम लोग थोड़ा देर का गैप लेंगे. और फिर एक बार और पढ़ेंगे और फिर एक बार गैप लेंगे, एंड देन वी विल रीड वन मोर टाइम. सो लेट्स रीड नीमोकोनियोसिस, ये पढ़ लेते हैं, देन वी विल टेक सम ब्रेक. So, dust within the size of 0.5 से 3 micron is a health hazard, producing after a variable period of exposure a lung disease known as pneumoconiosis, which may gradually cripple a man by reducing his working capacity due to lung fibrosis or and other complications. The hazardous effect of dust on the lung depend upon the number of factors such as chemical co- composition, fineness, concentration of the dust in the air, period of exposure, health status of the person exposed. Therefore, the threshold limit for different dusts are different. In addition to the toxic effect of the dust on the lung tissue, the superimposition of infection like tuberculosis may also influence the pattern of pneumoconiosis. The important dust diseases are silicosis, anthracosis, bicynosis. Bicynosis is cotton dust. बागासोसिस, बागा बागा से बोल सकते केन है, और बिसी बिसी बोल सकते कॉटन कपड़ा है. एस्बेस्टोसिस इन फार्मर्स लंग. As no cure for pneumoconiosis is known, it is essential to prevent these diseases from arising. Hi mummy. A brief account of these conditions are given below. So let's read silicosis. So silicosis क्या होता है? जो सिलिकन का एक्सपोजर में आ जाता है लंग्स, जो फाइब्रोसिस हो जाता है, right? So let's see what silicosis is. Among the occupational disease, silicosis is the major cause of permanent disability and mortality. It is caused by inhalation of dust containing free silica and silicon dioxide (SiO2). It was first reported in India from Kolar gold mines, Mysore, in 1947. Ever since its occurrence, has been uncovered in various other industries, example mining industry, coal, mica, gold, silver, lead, zinc, manganese and other metals, pottery and ceramic industries, sand blasting, metal grinding, building, construction work, rock mining, iron and steel industries, several others. In the mica miners of Bihar, out of 329 miners examined, 34.1% were found suffering from silicosis. अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा अमाउंट है. इन अ ceramic, so mica miners, in a ceramic and pottery industry, the incidence of silicosis was found to be 15.7%. The incidence of silicosis depends upon the chemical composition of the dust, size of the particle, and duration of exposure and individual susceptibility. The higher the concentration of free silica in the dust,
the greater is the hazard. Particles between zero point 0.5 to 3 microns are the most dangerous because they reach the interior of the lungs with age. The longer the duration of exposure, the greater the risk of developing silicosis. It is found that the incubation period may vary from a few months up to 6 years of exposure, depending upon the above factor. So the particles are ingested by phagocytes, which accumulate and block the lymph channel. Lymph channel को block कर दे रहा है अब ये. Then pathologically, silicosis is characterized by dense nodular fibrosis. The nodules ranging from 3 to 4 mm in diameter. Clinically, the onset of the disease is insidious. Insidious मतलब क्या हो गया? Acute कि chronic होता है? Chronic है. Some of the early manifestation are irritant cough, dyspnea on exertion and pain in the chest. Chest में pain करेगा, dyspnea on exertion है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगा exertion पे, and irritant cough होगा. With more advanced disease, impairment of total lung capacity is commonly present. An X-ray of the chest shows snowstorm appearance in the lung field. Silicosis is progressive, and what is more important is that silicosis are prone to pulmonary tuberculosis, a condition called silicotuberculosis. In recent years, doubt have been raised whether silicotuberculosis are really tubercular or purely silicotic. It is because sputum in the silicotuberculosis rarely show tubercle bacilli. Children and women of silicotuberculosis do not develop tuberculosis. Post-mortem on silicotuberculosis failed to prove the existence of tuberculosis disease but shows them to be cases of pure silicosis. The radiological evidence in the two conditions is so similar that one is apt to mistake a case of silicotic to be a case of tuberculosis of lung. The final answer to this question is still awaited. There is no effective treatment for silicosis. Fibrotic changes taken have already taken place, cannot be reversed. The only way that silicosis can be controlled, if not altogether eliminated, is by rigorous dust control measure. Example: substitution, complete enclosure, isolation, hydroblasting, good housekeeping, personal protective measure, and B is regular physical examination of the worker. Silicosis was made a notable disease under Factory Act 1948 and Miners Act 1952. So let's read anthracosis. ठीक है, anthracosis क्या होता है? Previously it was thought that pulmonary anthracosis was inert. Studies indicate that there are two general phases in coal miner pneumoconiosis. First phase क्या होता है? Is labeled as simple pneumoconiosis, which is associated with little ventilatory impairment. This phase may require about 12 years of work experience for it to develop. The second phase is characterized by progressive massive fibrosis. It is it causes severe respiratory disability and frequently results in premature death. Once a background of simple pneumoconiosis have been attained in coal worker, a progressive massive fibrosis may develop out of it without further exposure to it. From the point of view of epidemiology, the risk of death among coal miners have been nearly twice that of the general population. Coal miners' pneumoconiosis have been declared a noticeable disease in the Indian Mine Act 1952, also compensable in the Workmen Compensation Amendment Act 1959. Okay, so the third disease that we are reading is bicynosis. So bicynosis is cotton dust. Bicynosis is due to, this is coal dust.
anther anthracosis. This is cotton dust. Byssinosis is due to inhalation of the cotton fiber dust over long period of time. The symptoms are chronic cough and progressive dyspnea ending in chronic bronchitis and emphysema. India has a large textile industry employing nearly 35% of the factory worker. Incidence of byssinosis is reported in 7 to 8% in three independent surveys carried out in Mumbai, Ahmedabad and Delhi. Now we have bagasosis. So bagasosis is the name given to an occupational disease of lung caused by inhalation of bagasse या फिर sugar cane dust. ठीक है. It was first reported in India in Ganguly and Pal in 1955 in a cardboard manufacturing firm near Kolkata. India has large cane sugar industry. The sugar cane fibers which earlier went to waste is now utilized in manufacturing of paper, cardboard and rayon. Bagasosis has been shown to be due to thermophilic actinomycetes, for which the name thermoactinomycetes saccharine was suggested. The symptoms consist of breathlessness, cough, hemoptysis, and slight fever. Initially, there is acute diffuse bronchiolitis. uh, Skiagram may show mottling in the lungs and shadow. There is impairment of pulmonary fibrosis. If treated early, there is resolution of acute inflammatory conditions of the lung. If left untreated, there is diffuse fibrosis, emphysema, and bronchiectasis. ओके. देन प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है, शुगर केन से कैसे बच सकते हैं. डस्ट कंट्रोल मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ डस्ट सच एज वेट प्रोसेस एंड क्लोजिंग apparatus, exhaust ventilation should be used. Personal protection जैसे personal protective equipment, masks or respirators with mechanical filters with oxygen and air supply may be necessary. Medical control, initial medical examination and periodical medical checkup of the worker are indicated. Bagasse control by keeping the moisture content above 20% and spraying the bagasse with 2% propanoic acid, a widely used fungicide. Bagasse can be rendered safe for manufacturing use. Now we have asbestosis. ठीक है. एस्बेस्टोसिस क्या होता है. एस्बेस्टोसिस इज द कमर्शियल नेम गिवन टू अ सर्टेन टाइप ऑफ फाइब्रस मटेरियल. They are silicates of varying composition. The silica is combined with such bases of magnesium, iron, calcium, sodium, and aluminum. Asbestosis is of two types: serpentine and chrysolite variety. In the amphibole type, 90% of the world's production of asbestosis is of serpentine variety, which is hydrated magnesium silicate. The amphibole type contains little magnesium. The amphibole type occurs in different variety. Example: crocodile blue, uh, amosite brown, anthophyllite light white. Asbestosis fibers are usually 20 to 500 micron in length and 0.5 से लेके 50 micron in diameter. Asbestos is used in the manufacturing of asbestos cement, fireproof textile, roof tiling, bake lining, gasket, and several other items. Asbestos is mined in Andhra Pradesh,
Bihar, Jharkhand, Karnataka, Rajasthan, but most of it is imported from USSR, Canada, US, and South Africa. Right? Then we have got asbestos enters the body by inhalation, and fine dust may be deposited in the alveoli. The fibers are insoluble. The dust deposited in the lungs causes pulmonary fibrosis, leading to the respiratory insufficiency and death. Carcinoma of the bronchus, mesothelioma of the pleura, and peritoneum, and cancer of the GI tract. Great Britain, an association was reported between mesothelioma and living within 1 kilometer of the asbestos factory. The risk of bronchial cancer is reported to be high if occupational exposure to asbestos is combined with cigarette smoking. Take care. Mesothelioma, a rare form of cancer of the pleura and peritoneum, has been shown to have a strong association with crocidolite variety of asbestos. So the disease does not usually appear until after 5 to 10 years of exposure. The fibrosis in asbestos is due to mechanical irradiation and is peribronchial, diffuse in character, and basal in location. Okay. So, in contrast to silicosis, in which fibrosis is nodular, इसमें क्या होता है? फाइब्रोसिस मैकेनिकल इरिटेशन की वजह से होता है एंड इज पेरीब्रोंकियल, डिफ्यूज इन कैरेक्टर, बेजल इन लोकेशन. बेजल होता है. और सिलिकोसिस में नोड्यूलर इन कैरेक्टर एंड प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग. इसमें कहाँ है? नीचे पार्ट में प्रेजेंट है. ये नीचे में होता है, डिफ्यूज होता है. So, clinically, the disease is characterized by dyspnea, which is frequently out of proportion to the clinical signs in the lungs. In advanced cases, there may be clubbing of the finger, cardiac distress, and cyanosis. The sputum shows asbestos body, which are asbestos fibers coated with fibrin. An X-ray of the chest shows ground glass appearance in the lower two-thirds of the lung field. Once established, the disease is progressive even after removal of the worker from contract. The preventive measure consists of use of safer type of asbestos, जैसे क्रिसोलाइट या फिर एमोसाइट यूज़ करो. सब्सटीट्यूशन ऑफ अदर इंसुलेंट्स जैसे ग्लास फाइबर, मिनरल वोल, calcium silicate, plastic foam. Then rigorous dust control, periodic examination of the workers, biological monitoring, clinical X-ray, lung function, then continuing research. Then farmer's lung क्या होता है? Farmer's lung is due to inhalation of the moldily hay or grain dust. In grain dust or hay with a moisture content of over 30%, bacteria and fungi grow rapidly, causing a rise in the temperature to 40 to 50 degrees Celsius. The heat encourages the growth of thermophilic actinomycetes of the micro Polyspora pheni in the main is the main causes of farmer's lung. Acute illness is characterized by general and respiratory symptom and physical sign. Repeated attack causes pulmonary fibrosis and inevitable pulmonary damage and cor pulmonale. It is quite possible that the condition might be widespread in India considering the bulk of population engaged in agricultural work. हे जो होता है ना, हे उसको इनहेल करने से होता है, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ओवर 30% होता है, तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है. कौन सा बैक्टीरिया? थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज. तो उससे क्या होता है? डैमेज कर जाता है. थैंक यू गाइस.